Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, your English language instructor, Hasnain, once again with all of you people. Welcome to my 30 days crash course. If you don't know what this is, you should go to my first videos and check out those other episodes of the crash course. And we are at day 4 of our 30 days crash course. So let me ask you a question. What do you think about this crash course? You can tell me about that, but personally I would say I am giving you my experience. As a student, I have stayed roundabout for 6 years learning English myself, and I'm giving you all the information, all the process that I had, and I'm giving you the best of the best tips, and I'm giving you my own experience in this 30 days crash course. But the only thing that is stopping you from learning English is your lack of practice. The more you practice, the more you will be able to understand English, and the more you will be better at your job. So for this reason, you should stay a little bit more on practice and learn English and speak English with me. Learn it with Hasnain. So if you people remember, I'm going to give you a recap on the other days we had. I'm always giving you people recaps for the reason so that you can stay up to date and you can have that memory that what we talked about in the earlier days. So we talked in our first class about the structures, and we learned many structures. We learned the basic one, which is subject plus verb plus object, which is pretty much the easiest. Like for example, I play cricket. So I is a pronoun, which is the subject, play is the verb, and then there is object, which is with us, for example, cricket. So there can be many sentences, you can add articles and most things. And then in our second class, we talked about articles. What are articles and how do they work? So we talked about the, but we cut it the a little bit because the is a different topic. We talked about a and an. So what are these typically? So if you people don't know about vowels or consonants, you will have problem with that. So vowels, what are vowels? A, E, I, O, U. These are the vowels we have. These are the 5 vowels we have. And an is used for these vowels, and a is used for all the consonants, the rest of the alphabets or consonants. And then there is pronunciation. So for example, if there is a word like honest. So first of all, its pronunciation is not honest. It is honest. So we silent the H. And if we are writing a or an with it, so what will we write? A or an? We will write an. What is the reason? Because the pronunciation starts with O. So we will see it as we will look at it as, for example, we have a vowel, or we have a sentence that starts with vowel. So this was what we learned. We learned about sentences, positive sentences, which are simply you want to do something, so you can say positive. If you don't want to do something, so you can say negative. And if you are having a confusion about any of the things that you want to do, so interrogative. So now let's get into our topic and let's learn WH questions. So let's get into it. So if you people want to learn more about these, and if you want to write them down with yourself as notes, so I'm going to give you time. You can just pause the video and take the notes when I was talking there. So you can have those notes. Okay, so let's get into what WH questions are. First of all, let's learn what WH questions are. WH questions. WH questions. So first of all, what are these? They are major questions. We all know about these questions. These are the most important questions and one of the greatest parts of speech that we have. It's not a part of parts of speech, but it is very important because without these, no question is possible. You cannot create a question without these. You may have one of these, but there are some alternatives we have for them, like for example is or did, or there are multiple other things, but the important questions that we have start with WH questions. So let's learn a few of them. जब भी हम लोग किसी के साथ मिलते हैं तो हमसे कुछ सवालात पूछे जाते हैं जो बहुत कॉमन है, इस तरह कि आपका क्या नाम है, कैसे हो, ठीक हो, कैसे हैं हालात. तो ये सारे सवालात पूछे जाते हैं. इसी तरह इंग्लिश में हेलो, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, what's life going, where are you living nowadays, what are you doing, is there a job of yours nowadays, ये सारे सवालात, how is your family, ये सवालात इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं. तो चलिए थोड़े से WH क्वेश्चंस. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट
what, हमारे पास what आता है, फिर आता है where, फिर हमारे पास इस तरह बहुत सारे हैं, whom, when, how एंड एटसेट्रा। हमारे पास इस तरह के कुछ और भी WH क्वेश्चन है, इसकी पूरी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट वाले हैं ये वाले हैं, हम लोग इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट का मतलब है किया, काफ या लिफ या किया। अभी अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है हमारे लिए, क्योंकि समटाइम्स इसकी मीनिंग्स अलग हो सकती हैं। तुम क्या कर रहे हो, अभी अगर इमोशन अलग होगा तो फीलिंग भी अलग होगी, बात अलग होगी। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन द इमोशन, इन द स्ट्रेस एंड इन द सेलेबल स्ट्रेस। तो सबसे पहले लेट्स सी अ फ्यू क्वेश्चंस। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, आपका फेवरेट स्पोर्ट क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर एज, आपकी एज क्या है। व्हाट स्कूल आर यू रीडिंग इन, आप किस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। What's your father's name, आपके पापा का क्या नाम है। What do you want to become in the future, आपको क्या बनना है बड़े होकर। What are your hobbies, What are your plannings। और इस तरह बहुत सारे WH क्वेश्चंस के अंदर what के क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह फिर आगे हम लोग जाते हैं तो where का मतलब है कहाँ। तो where do you live, आप कहाँ पर रहते हैं। Where is he, वो कहाँ पर है। Where is my book, मेरी किताब कहाँ पर है। Where should I live, मैं कहाँ पर Where should I sleep, मैं कहाँ पर सूं। इस तरह के बहुत सारे सवालात बनते हैं where से भी। whom, किसके साथ। whom were you coming with, आप किसके साथ आ रहे थे। whom is your friend, कौन आपका दोस्त है। whom is your teacher, आपका टीचर कौन है। फिर इसके साथ आता है when will you go to school, कब जाओगे। when was your last birthday, कब थी बर्थडे। when did you go to your parents house, कब गए थे अपने पेरेंट्स के घर। वेल मेरे साथ तो नहीं, बट एडल्ट से ये सवाल पूछा जा सकता है। when did you stop going to school, आपकी कब स्कूल जाना छोड़ दिया था। when did you start teaching, आपने कब टीचिंग स्टार्ट की थी। फिर आखिरी में आता है how are you feeling, how is your family, how are you doing, how is your job, कैसे how। अगर देखा जाए तो जिस तरह यहाँ पर W से शुरू होता है, इसी तरह उर्दू के अंदर भी सबका काफ गाफ इनसे शुरू होता है। अगर देखा जाए कैसे हो, क्या कर रहे हो, कब गए थे, किसके साथ, देखिए ये सब के अंदर काफ़ी शुरू होता है। तो एक तरह से हमारे उर्दू की भी WH क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए हैं हमारे साथ। इस तरह फिर हाउ आर यू फीलिंग, व्हाट विल यू डू इन द फ्यूचर, वेयर विल यू गो, वेयर विल यू स्टडी, whom विल यू मैरी। अजीब सवाल है। व्हेन विल यू कम बैक टू पाकिस्तान। इस तरह बहुत सारे सवाल इन सब के साथ बनते हैं। तो आप सब के लिए मेरे पास एक असाइनमेंट है। ये तो मैंने यहाँ पर कुछ ही WH क्वेश्चंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी बात की है। इस तरह और भी बहुत सारे WH क्वेश्चंस हैं, मैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा और आपने उन सब के साथ एक एक या दो सेंटेंसेस बनाने हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है उन सेंटेंसेस को, मैं उन्हें चेक करूँगा और देखूंगा जिसका सबसे अच्छा और बेहतरीन सेंटेंसेस होंगे मैं उसका नाम लूँगा यहाँ पर, और एक तरह से मैं उसको कहूँगा दैट यू आर द बेस्ट एंड यू डिड योर होमवर्क। सो स्टे ट्यून्ड, और अगली क्लास के अंदर हम लोग इस तरह ही WH क्वेश्चंस के ऊपर भी रिवीजन करेंगे और भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगर आप लोगों को याद नहीं तो ये क्रैश कोर्स मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है कि ताकि आप लोग सीख सकें। तो सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि मेरी वीडियोस देखें, नोट्स बनाएं और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसी के साथ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब तक आप अपने आप को परफेक्ट करेंगे तब तक मेरी नेक्स्ट क्लास तक मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।